बाखर पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट किया है 10th एनुअल डे इकोस ऑफ ब्रिलियंस आवर जर्नी आवर स्टोरी। बाखर पब्लिक स्कूल के प्रीमाइसेस में इवेंट रखा गया था, जहां पर चीफ गेस्ट रहे प्रोफेसर बट्टू सत्यनारायण जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। गेस्ट ऑफ ऑनर रहे मिस्टर शंकर गौड़ा हुसमनी, प्रिंसिपल अप्पा पब्लिक स्कूल। अलहाज जनाब सैयद बाखर शब्बीर हुसैनी साहब, प्रेसिडेंट बाखर पब्लिक स्कूल। डॉक्टर सैयद अली बाखर हुसैनी, सेक्रेटरी बाखर पब्लिक स्कूल। इस मौके पर हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल के साथ साथ सभी मैनेजमेंट स्टाफ एंड मेंबर्स ने सभी लोगों का इस्तकबाल किया और इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा। बच्चों ने बड़े शानदार तरीके से अपने परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही डेडिकेशन के साथ बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखते हुए पेरेंट्स और स्टाफ दोनों ने बहुत ही इसे एंजॉय किया। आइए देखते हैं। और जब उन लोगों ने सोतल पिक्चर या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सौदे से बेहतर है। प्रोफेसर बट्टू सत्यनारायण सर, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। और गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर शंकर गौड़ा हुसमानी, प्रिंसिपल अप्पा पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर अलहाज जनाब सैयद हसन शब्बीर मोहम्मद हुसैनी, सज्जाद नशीन, रोजा खुदा गुलबर्गा। ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर अलहाज जनाब सैयद बाखर शब्बीर हुसैनी सर, प्रेसिडेंट ऑफ बाखर पब्लिक स्कूल। Respected Dr. Sayyid Ali Bakhar Hussaini, Secretary of the school, Headmistress Ms. Malini Matmari, Coordinators, highlights the integration of arts and science. English Carnival as a language day. We are thrilled to announce the English Carnival 2024, a two-day extravaganza designed to enhance students' proficiency in English while fostering a love for language and communication. This vibrant event promises an exciting blend of educational activities, competitions, and interactive sessions, making learning both fun and impactful. Objectives of the carnival: to improve students' language skills in reading, writing, speaking, and listening; to build confidence in communication and public speaking; to encourage creativity and critical thinking through engaging activities; to highlight the importance of English as a global language in education and beyond. Key activities in the event: spellbee, debate, elocution, storytelling, creative writing, workshop, role plays, skits, and poetry corner. These are some of the highlights which we have conducted in the English Carnival. Health Club. Health Club is an association of students in school for taking care of everything that is necessary for keeping an individual healthy. Al-Badr College of Dental conducted a workshop in the school campus and full students were diagnosed and prescribed necessary medications. Competitive examinations. Bakhar Public School students have participated in many competitive examinations in this year. Delta CCAT competition is about enhancing the English proficiency. There are 543 students participated, 236 students are entered in the second round. 10th annual day. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. I, Mrs. Malini Matmari, Headmistress of Bakhar's Public School, welcome you all for this auspicious occasion. Today you are students, tomorrow you are the citizens of this great nation, and the nation, the standard of living that depends upon the quality of our citizens. The quality of citizens depends upon the education. The education is very, very important in our life, and who are highly educated, definitely they do better. And for our nation, we need everyone should have the education, and that's why the government of India is encouraging everyone to go to the school and colleges and higher education. And the government of India now is striving to increase the enrollment ratio in the higher education to 50%. या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।
One eye is Sharana Basveshwara and the other eye is the Khaja Vande Nawaz. And that makes the eyes of Kalburgi. So that was something that really struck me, and I was very impressed by the kind of an attitude that an officer had. और इससे भी मज़ेदार ये था कि हमने यहाँ भी माथा टेका और दरगाह में भी आके माथा टेका था. So I was all very impressed by that. And today, my pleasure has increased with an added honor to it. And that is because I have grown up in the patronage of the Sharana Basveshwara Samsthana, and today I am on the platform of the Khaja Vande Nawaz Dargah family. So that is something today I feel I am very honored that I have an experience of that eyes that my officer used to talk about. It's a great honor to stand here today and speak in front of you all on the special occasion of 10th school annual function. Today is a day of celebration, a day of acknowledgement and hard work and dedication to the students, teachers and staff. This year has been exponential for our school as we have achieved many milestones together, from academic success to sports achievements. We have accomplished so much and made our school proud, Alhamdulillah. This year, the third batch of our school appearing CBSE exam. Let us pray Almighty to 100% success as we did past 2 years. I request all the parents to fully utilize the service of Madrasa. Last but not least, I wish to thank all the honorable guests, teaching staff, non-teaching staff, ayahs, drivers, cleaners, secretaries for the dedication and support by which it is not possible for our school to achieve the goal. जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. आगे है बरसात, पीछे है तूफान. Our school also Aliza Khan Durrani from 4th A. Aliza. Names of our winners. Anyone's like any. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. When you go get up, when you go get up, Hey.
लगा के रजनीकांत and develop whatever I can. Nobody can stop me. The environment, lack of empathy, and all animals worried about the human being, and the king of the jungle called the meeting. Health and knowledge of self. Our life, this human are destroying it. We have no grass to eat, no tree shade to sleep. Human need the forest. We need it too. Save us and you too will be safe. एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। इससे कुछ न होगा और ये बंदर आप सबके घर पर राज कर रहा है। छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। रिश्तों से ज्यादा वक्त हम अब अपने फोन को देते हैं, भूल जाते वो खुशियाँ जो उनके साथ रहने मिलती है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। मैंने तो अपने भाई को पर पिताजी हाँ बेटा, मैं कल ही तुम्हें एक नया मोबाइल दिलाऊंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए। लो, हाँ यार, कैसा है? आ रहा है ना? आजा, आज रात बहुत मस्ती करेंगे, मजे करेंगे, हंगामा करेंगे और देर रात घूमेंगे। पापा पापा, आज मेरी सहेली का बर्थडे है और उसके यहाँ पार्टी है। क्या मुझे आज रात जा सकती हूँ मैं उसके पार्टी पे? कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी, 8 बजे तक आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रेंड के बर्थडे में जाना इतना जरूरी है क्या? पर क्यों? बाहर आवारा लड़के फिरते रहते हैं, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? तुम नहीं जाओगी। पर पिताजी। हाँ बेटा, तुम नहीं जाओगी। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम। मगर क्यों दादाजी? क्योंकि तुम जैसे आवारा लड़कों की वजह से लड़कियां महफूज नहीं है। अगर तुम जैसे आवारा लड़कों को घर में ही बिठा दिया जाए तो लड़कियां आसानी से जा सकती। ये है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों को भगा दिया था देश से। बेगम हजरत महल, जिन्होंने अवध में अपने दम पर सारे अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। हमारी फेमस भारत की सावित्री अरुंधति रॉय, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और गरीबों की सेवा करने वाली और
नारियों को सहारा देने वाली मदर टेरेसा, क्या ये सब नारियां नहीं थी? माँ, मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी अपना नाम रोशन करना है। जो सृष्टि को जलाकर राख कर दे वो चिंगारी है नारी। चिश्ती जिस पर घूम रही है वह अधूरी है नारी। जब पुरुष अकेला है तो हमेशा उसके साथ है नारी। Good evening, all the parents, teachers, students, and all the stakeholders of the Bakar Public School. Today, we have completed the successfully 10th annual day program in the name of Echoes of Brilliance, Our Journey, Our Story. And the response is given by the parents is really tremendous. We are very happy that you have come and observed all the programs till the last, and it was really nice, and your cooperation was really appreciated, and we thank you all. So hereafter, we are always looking forward to you, that you will give continuous support to grow in the different levels. Thank you so much, all the parents, teachers, and everyone, the one who given the support to complete this annual day program. I thank you, my sincere thanks to our chief guest of the program, Professor Bhattu Satyanarayana sir, Vice Chancellor, Central University Gulbarga, and guest of honor, Mr. Shankar Gowda Hosmani, Principal, Appa Public School, and other members, management, my President of the school, and our secretaries are, headmisters, and all the department heads, teachers, coordinates, everyone. I sincerely thank you. Because of you only, this program becomes like a successful, and we are really happy with that. And the huge response was seen here, and in future also looking forward all this kind of support from your side. Thank you so much. Thank you for watching Go Hash. Like, share, and subscribe our channel.